Welcome to EduSet Telecast. I am Harsh Kumar, lecturer in chemistry, SCRT. Dear students, there is an old saying, practice makes a man perfect. Till now, you must have practiced the process of crystallization. In the earlier two experiments, I have demonstrated how you can prepare good crystals of ferrous ammonium sulfate and potash alum. Dear students, you must have heard about colloidal solutions. Colloidal solutions are intermediate between two solutions and suspensions. If the size of the particles are in between 1 nanometer and 100 nanometer, the mixture is known as colloidal solution. In this experiment, I am going to demonstrate the preparation of सोल of starch. प्यारे बच्चों, आपने कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। कोलाइडल सॉल्यूशंस जो हैं उनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में हो तो उन सॉल्यूशंस को हम कोलाइडल सॉल्यूशंस कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में मैं आपको स्टार्च का सोल बनाना जो है वो आपको बताऊंगा। A sol is a solution of solid in liquid based upon the affinity between the disperse phase and dispersion medium. Colloidal solutions are of two types, lyophilic colloids and lyophobic colloids. प्यारे बच्चों, colloidal solutions दो प्रकार के हैं, lyophilic colloids and lyophobic colloids. Lyophilic colloids जो हैं ये दो वर्ड से मिलकर बना है. Lyo means solvent, philic means loving. In these colloids, both the disperse phase and dispersion medium have great affinity for each other. For example, starch, gum sole in water. These are normally stable and can be easily prepared by mixing the disperse phase and dispersion medium and heating if required. If the disperse phase gets separated from the dispersion medium by evaporation, the sole can be reobtained by simply mixing the two phases. That is why these are also called reversible colloids. If the water is the dispersion medium, it is called hydrophilic colloid. प्यारे बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशंस में दो फेज होते हैं, एक डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्शन मीडियम. डिस्पर्स फेज वो है जो चीज़ हम किसी उसमें घोलते हैं और डिस्पर्शन मीडियम है जिसमें हम उस चीज़ को घोलकर कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाते हैं. नाउ लायोफोबिक कोलाइड्स के बारे में बताते हैं. लायो मीन्स सॉल्वेंट एंड फोबिक मीन्स हीटिंग. इन दिस कोलाइड्स both the disperse phase and dispersion medium do not have any affinity for each other. Rather, they hate each other. For example, sol of ferric hydroxide, aluminum hydroxide, arsenic sulfide in water. These sols are normally unstable and two phases try to get separated from each other. These sols cannot be prepared by mixing two phases and have a special method for preparation. प्यारे बच्चों, लायोफोबिक कोलाइड्स जो है वो इजीली प्रिपेयर नहीं होते और उनको अलग मेथड से बनाया जाता है क्योंकि उन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम की आपस में एफिनिटी बहुत कम होती है. एग्जाम्पल हैं इनके फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और आर्सेनिक सल्फाइड. इफ द टू फेजेस गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल बाय इवेपोरेशन, the sol cannot be reobtained by simply mixing the two phases. That is why these are also called irreversible colloids. If water is the dispersion medium, these are called hydrophobic colloids. प्यारे बच्चों, यदि हम पानी का इस्तेमाल करते हैं डिस्पर्शन मीडियम के रूप में तो हम इन सोल्स को हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स भी कहते हैं क्योंकि हम इस पानी का इस्तेमाल इसमें कर रहे हैं. स्टार्च, गम एंड एग एल्ब्यूमिन forms a stable hydrophilic sol. However, the preparation is carried out with the boiling water for better and quicker dispersion of starch into water. Dear students, हम starch, gum और egg albumin इनका stable hydrophilic sol बना सकते हैं और इसके लिए हम गर्म पानी का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है वो हमारा काम जल्दी हो जाएगा. यहाँ पर मैं आपको जो है वो सिर्फ स्टार्च का एक एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ. आप ठीक इसी प्रकार ही गम का भी और एग एल्ब्यूमिन का भी आप जो है सोल बना सकते हैं. नाउ केमिकल रिक्वायर्ड्स. नंबर 1, स्टार्च अबाउट 1 gram. दिस इज स्टार्च. द क्वांटिटी रिक्वायर्ड इज अबाउट 1 gram. डिस्टिल वाटर. This is distilled water.
तो प्यारे बच्चों, इसमें हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो स्टार्च, जो मैंने आपको दिखाया, ये स्टार्च बताया आपको मैंने, और दूसरा डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर मैंने जैसे आपको दिखाया है, इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। नाउ वी मूव ऑन टू द apparatus. The apparatus required in this experiment is two 250 ml beakers. This is one, this is another 250 ml beaker. (250 ml) beakers. Second is steel spatula. This is steel spatula. This we use to take out some chemicals from the bottle. Steel spatula. Glass rod. This is glass rod. It is used for stirring purpose. हिलाने के लिए, सॉल्यूशन को मिक्सिंग के लिए, हिलाने के लिए इस ग्लास रॉड का प्रयोग करते हैं। ये ग्लास रॉड। One funnel. This is funnel. Made up of glass funnel. It is used for filtration purpose. Funnel. Now filter paper. This is a filter paper. We use this for filtration purpose. Filter paper. ये filter paper है. We can make a cone of this filter paper like this. So that it may easily fit in the funnel. इसको funnel में इस प्रकार से रख के हम प्रयोग करते हैं। तो this is filter paper, this is funnel, and both are used for filtration purpose. Now funnel stand. This is our funnel stand. We can put our funnel in this funnel stand. So this is funnel stand. Pastor motor. This is pastor motor. इसको खरल भी कहते हैं हम। एंड दिस इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग। कोई चीज़ को पीसने का अगर हमें काम करना है, लंप्स को अगर हम ब्रेक करना है, तो हम इसमें डालकर इसको पीस सकते हैं। स्पिरिट लैंप। दिस इज स्पिरिट लैंप. दिस विल बी यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पस. इसका इस्तेमाल सॉल्यूशंस को या किसी चीज़ को गर्म करने में हम लोग करते हैं. स्पिरिट लैंप. दिस इज स्पिरिट लैंप. watch glass. Watch glass.
it is used to keep some chemicals. Like I have kept starch in this watch glass. So this is watch glass. And last, wash bottle. This is wash bottle. It is used for washing and storage for water. I have stored distilled water in this wash bottle. सो प्यारे बच्चों, आपने सभी ऑपरेटर्स नोट कर लिए होंगे और आप भिन्न भिन्न ऑपरेटर्सों के बारे में जान भी गए होंगे. आफ्टर द ऑपरेटर्स, डियर स्टूडेंट्स, we move on to the procedure. First, we will grind the starch in the mortar with the help of pestle. This is our starch. This is the mortar and this is the pestle, and we will grind it to break the lumps. It may contain some lumps, so we will have to break it gently and grinding like this. We will grind it. प्यारे बच्चों, इसको कभी आपने बिना लंप तोड़े कभी भी इसका प्रयोग नहीं करना है. इट मे कंटेन सम हार्ड पार्टिकल्स, so we will grind it to make a fine powder. So now the starch is broken and a fine powder is prepared like this. So now you can see this is quite fine. Now we will make a thin paste of this by adding slightly hot distilled water. This much water will be sufficient. We will make a thin paste of starch. पीसने के बाद आपने इसका एक थिन पेस्ट जो है वो बना लेना है. सो आवर थिन पेस्ट इज रेडी नाउ. Take this much water, about 100 ml distilled water in this beaker, and heat this to the boiling. Now we will heat this distilled water to boiling. It will take some time. प्यारे बच्चों, ठंडे में अगर आप इसको बनाएंगे तो कई बार इसके लम्प्स बन जाते हैं, ढेले बन जाते हैं, जो कि हम नहीं चाहते. इसलिए हम इसको थोड़ा गर्म करेंगे अप टू दी बॉइलिंग पॉइंट. तो ये हमारा थिन पेस्ट है जो कि हमने स्टार्च में थोड़ा सा पानी डिस्टिल्ड वाटर यूज़ किया है वो लेके बनाया है. इसको आप हिलाएंगे तो आप देख सकते हैं इट शुड बी लाइक दिस. गाढ़ा पेस्ट आपने यूज़ नहीं करना, इट शुड बी थिन. और इसको जो है अब हम इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म करेंगे हम इसको अप टू बॉइलिंग. तो फिर हम इसको जो है वो इसमें डालेंगे. Dear students, we have heated distilled water up to the boiling point. This you can say is nearly boiling. जितना हमें गर्म चाहिए था boiling वो आ चुका है. And now
put off the lamp. Now this is the distilled water 100 ml which you have heated up to boiling. Now I will add this paste. This is the starch paste which we have prepared earlier, thin paste of starch, and we will add this paste to this water with constant stirring. This you have to stir for some time. It is always better to again boil this solution for 5 minutes more. इसको हम दोबारा जो है वो गरम करेंगे 5 मिनट के लिए. विथ स्टिरिंग, हिलाते रहना है इसको आपने. You should not stop the stirring process. It should go on while you heat the solution. For 5 minutes we will heat the solution with stirring. This is the stirrer, glass rod stirrer, by which we can stir this. So now students, as you can see, the solution is hot up to the boiling point and we have heated this for 5 minutes. So stop heating now. Stop heating. Allow this to cool before filtration. इसको हम फिल्टर करेंगे, लेकिन फिल्टर करने से पहले ये ठंडा होना चाहिए. कभी भी हम इसको गरम गरम फिल्टर नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारा फिल्टर पेपर जो है वो ब्रेक हो सकता है. तो इसको हम ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसको फिल्टर करेंगे. As you can see, now the solution is cooled down. अब ये ठंडा हो चुका है and it is ready for the filtration process. अब हम इसको फिल्टर कर सकते हैं. ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसको फिल्टर करेंगे. As you can see, this is our filtration arrangement. It contains a funnel stand. This is our funnel stand, one funnel and one filter paper. So we are going to filter this solution. फिल्टर करना इसको ज़रूरी है. थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ जो इसमें रह गई हैं वो फिल्टर पेपर में आ जाएंगी.
Dear students, as you can see, the filtration process is going on and a translucent solution is collecting in this beaker. This is our required sole of starch. As we filter it, so the solution collected in this beaker is our required sole of starch. तो प्यारे बच्चों, आपने इस तरह देखा कि हमने किस प्रकार से स्टार्च का सोल प्रिपेयर किया। आपने ऑपरेटर्स भी नोट कर लिया, प्रोसीजर को भी बड़े ध्यान से देखा, किस तरह इसको हमने किया। नाउ वी मूव ऑन टू द प्रिकॉशंस। द प्रिकॉशंस you should take while performing this experiment. The first precaution is the starch powder should not be added directly to boiling water. Instead, make a thin paste and then add. स्टार्च पाउडर को कभी भी डायरेक्टली हम पानी में नहीं डालते। मेक ए थिन पेस्ट, जैसे मैंने शुरू में पेस्ट बनाया और पेस्ट बनाकर गर्म पानी में डाला, तो आपने भी फर्स्ट प्रिपेयर ए थिन पेस्ट एंड देन ऐड टू द बॉइलिंग वाटर। सेकेंड इज द कंटेंट ऑफ द बीकर शुड बी कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर बिफोर फिल्ट्रेशन। जैसा कि अभी आपने देखा, फिल्टर करने से पहले हमने जो बीकर था उसके कंटेंट्स को ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद हमने इसको फिल्टर किया है। तो कभी भी गरम गरम सॉल्यूशन हम फिल्टर नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारा फिल्टर पेपर ब्रेक हो सकता है। तो दीज आर द टू प्रिकॉशंस यू शुड कीप इन योर माइंड। नाउ स्टूडेंट्स, एज यू नो, प्रैक्टिकल में न सिर्फ आपकी प्रैक्टिकल स्किल देखी जाएगी, वरन आपकी नॉलेज भी टेस्ट होगी, और वो नॉलेज टेस्ट होगी कुछ वाइवा क्वेश्चंस के द्वारा। तो कुछ वाइवा क्वेश्चंस मैं आपकी सुविधा के लिए दे रहा हूं यहाँ पर, आपने ध्यान से सुनिए। आवर फर्स्ट वाइवा क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पार्टिकल साइज रेंज ऑफ कोलाइड्स? Answer to this question is 10 raised to power minus 9 to 10 raised to power minus 6 meters. कोलाइडल पार्टिकल्स की साइज रेंज क्या है? 10 raised to power minus 9 to 10 raised to power minus 6 meter. Question number 2, what is a सोल? सोल क्या है? Answer to this question is, a सोल is a colloidal solution of a solid in a liquid. Question number 3, what is a gel? Gel क्या है? Answer, a gel is a colloidal solution of a liquid in the solid. It is in the semi-solid state. Question number 4, चौथा question, what is the difference between a true solution and a colloidal solution? एक true solution और एक colloidal solution में क्या अंतर है? Answer, true solution, it is a homogeneous mixture of a solute like NaCl in a solvent like water. The solute particles are not visible even with the ultra microscope. The solute particles, because of their smaller size, can diffuse out of parchment paper. True solution प्यारे बच्चों एक ऐसा solution है जैसे कि सोडियम क्लोराइड को हम पानी में घोलते हैं, तो पार्टिकल्स जो हैं वो सोडियम क्लोराइड के घुलने के बाद विजिबल नहीं होते। कोलाइडल सॉल्यूशन, इट इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर with the solute particles dispersed phase are dispersed in a solvent or dispersion medium. The colloidal particles are visible with the ultra microscope due to Tyndall effect. The colloidal particles, because of their large size,
cannot diffuse of a parchment paper. कोलाइडल सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें कि सॉल्यूट पार्टिकल जो हैं वो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्शन मीडियम जो है कोई सॉल्वेंट होता है। कोलाइडल पार्टिकल जो हैं दे आर ओनली विजिबल बाय द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में वो दिखाई नहीं देते, केवल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में ही विजिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the reversible or intrinsic colloids? Answer to this question is a substance whose colloidal solution can be prepared by just mixing with the solvent without heating is called a reversible or intrinsic colloid. Question number 6. What is an irreversible or extrinsic colloids? A substance whose colloidal solution cannot be prepared by just mixing it with the solvent is called irreversible or extrinsic colloids. Special method of preparations are employed for preparing them. Question number 7. What is meant by lyophilic colloids? Lyophilic colloids क्या है? Answer. Lyophilic colloids are generally electrically neutral. It is surrounded by hydration layers and is stable. Lyophilic colloid जो हैं they are generally electrically neutral. वो सामान्यतः जो है वो electrically neutral होते हैं and they are surrounded by hydration layers और वो stable भी होते हैं। Next question. What is meant by lyophobic colloid? Lyophobic colloid क्या है? Lyophobic colloid is electrically charged and tend to stabilize by repulsion between the charged colloidal particles. It is relatively unstable and a colloidal particle tend to separate from the dispersion medium. Lyophobic colloid जो हैं वो उसके पार्टिकल जनरली चार्ज्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू पॉजिटिवली चार्ज सोल। किन्हीं दो पॉजिटिवली चार्ज सोल्स के नाम बताएं। Answer to this question is FeOH thrice Sol and TiO2. Question number 10. Name two negatively charged sols. Answer As2S3 Sol and Au Sol or gold Sol. Question number 11. What is dialysis? What is its use? Dialysis क्या है और इसका क्या उपयोग है? आंसर, डायलिसिस इज अ मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ए सोल। व्हेन ए कोलाइडल सोल्यूशन इज केप्ट इन ए पार्चमेंट पेपर which is then placed in a solvent, the ions diffuse out of the parchment paper whereas a colloidal particle cannot. Is dialysis a fast process? क्या डायलिसिस एक फास्ट प्रोसेस है? आंसर, नो, इट इज अ स्लो प्रोसेस। ये एक धीमा प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू इंक्रीज द स्पीड ऑफ डायलिसिस? आंसर, नंबर 1, इलेक्ट्रोडायलिसिस, बाय डूइंग डायलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायलिसिस की स्पीड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इलेक्ट्रोडायलिसिस एक मेथड है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं जिससे कि डायलिसिस का रेट बढ़ जाता है। एंड सेकेंड इज बाय यूजिंग हॉट सॉल्वेंट्स, गर्म सॉल्वेंट को प्रयोग करने से। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स? कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज कहां से आता है, क्या ओरिजिन है? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज origin of charge on colloidal particle is due to the adsorption of ions. Thank you.